Hello friends, welcome to Mart Talk IT Training. This is your host and tutor Vicky Verma, and we are doing PHP tutorial video series for beginners step by step in English plus Hindi. This is the 7th part of the PHP tutorial video series. In this video, we are going to see different types of loops in PHP: for loop, for each loop, while loop and do while loop. तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। मैं हूं विक्की, आपका होस्ट और ट्यूटर। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स इन पीएचपी: फॉर लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। वी आर गोइंग टू सी PHP loops or loops in PHP. So in PHP there are 4 types of loops, or in any programming language: for loop, for each loop, while loop and do while loop. So first of all we will see what is loop. So a loop executes a block of code for a specific number of times. So friends, the meaning is if we write a code inside a loop for each, while or do while loop, it and specify the condition that how many times that loop should run, then that code will run that many times. So दोस्तों PHP लूप में 4 प्रकार के होते हैं, चाहे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, PHP ही नहीं, C++, जावा। फॉर लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो लूप होता क्या है? लूप एक कोड है, लूप एक तरीका है जिसके थ्रू हम किसी भी कोड को एक लाइन के कोड को या फिर मल्टीपल लाइन के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, बार बार। अगर उस कोड को हम उस लूप के अंदर लिख दें और स्पेसिफाई कर दें कि वो लूप कितनी बार चलनी चाहिए, तो वो कोड उतनी बार रन करेगा। सो फ्रेंड्स, वी विल सी how to declare and use all these 4 types of loop: for loop, for each loop, while loop and do while loop. So let's see practically. So I am using Microsoft Web Matrix as a text editor, and here I'm printing all these statements or lines or block of codes on my screen using PHP codes. You can see here. So first of all, we'll see how to declare a for loop. So the syntax is for x equal to 1, then semicolon, then x less than equal to, we are checking the condition here. Here we are doing initialization, then check condition, and then increment or decrement. So for loop takes 3 parameters: one initialization, then condition check, and then increment or decrement. So here we are doing x equal to 1, x less than equal to 5, and x plus plus. So this loop should run for 5 times because x is starting from 1, and it should, I have written here, echo the value of x is x, $x. And again I am concatenating here. So let's see whether it is printing. So this should echo 5 times on our screen if I uncomment this line. So let's see. So friends, you can see here it has printed 5 times. The value of x is 1, second time the value of x is 2, third time value of x is 3, fourth time 4, fifth time 5. So this way we can execute our loop. We can write here single line of code, or we can write here multiple line of codes, whatever we want according to need, inside this starting and closing bracket of for loop. So same way, if I run the condition for less than equal to 10, it will print up to 10 times. So you can see here it has printed from 1 to 10 the value of x. Now the second type of loop is for each loop. So for each loop, to use a for each loop, I have declared an array here named colors, and you can say I have used array keyword and passing 4 values inside this array in comma separated. So this array has 4 values. Now I am using a for each loop to loop through each item in the loop. So it has 4 items. So this for each loop will run for 4 times.
Now if we have 3 items, it will run for 3 times, and if this array has 10 items, this for each loop will run for 10 times, and if this array has n number of items, we don't know how many items are in this array. If we are fetching this array from database, then we don't know that how many columns or how many items are being fetched from database. So the loop will run as many number of items are present in your array. So we are using for each loop here. So this is the syntax. This way we can use for each loop. So for each colors as value and then echo value. So it will. So this is the name of the array, and it is fetching all the items in the array one by one each time and putting in this value. This is a variable named value. So if I have uncommented this line, this should print each item inside the array one by one. So let's see here, is it printing or not? So let's refresh this page, friends. Let me save that. And see, friends, it has printed red, green, blue, yellow, because there are 4 items in this array. But if I remove one item from this array and again save this file and run this loop, so it is printing 3 items. So this for each loop will run as many number of items are present in this array. So one thing is to know that why we need for each loop. So definitely we need for each loop because in scenarios such as you are fetching data from a table in a database, select star from a table name, and you don't know that how many rows are going to be fetched or how many rows are going to be fetched. So as number of items, so each row will behave as an item. So at that time, this for each loop will help you because you don't know how many rows are being fetched and you store that rows into an array. So this for each loop will execute for each item in that array if you use for each loop for printing your results. तो दोस्तों हमने देखा कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है. तो फॉर लूप का ये सिंटैक्स है, ये इनिशियलाइजेशन है x इक्वल टू 1, ये कंडीशनल चेक कर रहे हैं x इज लेस देन इक्वल टू 10, और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ कर सकते हैं x प्लस प्लस या x माइनस माइनस. तो x प्लस प्लस कर रहे हैं यहाँ पर और वैल्यू ऑफ x यहाँ प्रिंट कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने 10 कंडीशन चेक किया है, इसलिए ये 10 टाइम्स वैल्यू प्रिंट कर रहा है. अगर हम इस कंडीशन को 10 के जगह 1 कर दें या फिर 5 कर दें तो इट विल प्रिंट 5 टाइम्स. तो आप देख सकते हो इट इज प्रिंटिंग 5 टाइम्स. तो इस तरीके से आप फॉर लूप का इस्तेमाल करें. दूसरी बात फॉर ईच लूप. सो फॉर ईच लूप जनरली हम अरेज में अरे के एक एक आइटम को प्रिंट करने के लिए या अरे के एक एक आइटम को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. चाहे वो अरे आप स्टैटिक डिक्लेयर करें या फिर वो अरे आप डाटा बेस के टेबल में से डाटा फेच करके लाएं और उस अरे में स्टोर करें. और खास करके जब आपको पता ना हो कि कितना रोज या कितना आइटम्स आपने फेच करके लाया है क्योंकि आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम फायर किया है क्वेरी अगर, तो ये अगर आप फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करें तो आपका लूप उतनी ही बार रन करेगा जितना आइटम आपके अरे में मौजूद होगा. जैसे कि यहाँ पर इस अरे में हमने 3 आइटम स्टैटिकली डिफाइन किए हैं, ग्रीन, ब्लू, येलो, इसलिए ये 3 आइटम्स प्रिंट कर रहा है, 3 बार रन कर रहा है ये फॉर ईच लूप. इट इज रनिंग 3 टाइम्स. अगर मैं यहाँ एक और आइटम घटा दूं तो ये 2 ही बार रन करेगा. लेट्स सी इट इज रनिंग सिर्फ ओनली 2 टाइम्स. तो दोस्तों ये है फॉर लूप और फॉर ईच लूप. नाउ द नेक्स्ट वी विल सी is while loop and do while loop. There is an alternative to while loop is an alternative to for loop. So if you don't want to use for loop in your application, then you can use do while loop or while loop.
So while loop, what it does, it also does the same thing. See here how to declare while loop. So here I am declaring x is equal to 1 and while, so this loop should run while x is less than equal to 5. So it should start from 1 and it should run up till 5 because equal to 5, less than equal to 5, and this should print the value of x on the screen in here. So let's uncomment this line and let's see whether it is working or not. So refresh this page. Let us check, friends. So you can see here, friends, the value of x in while loop is printed here from 1 to 5. Same way, if you change here from 5 to 10, it will print for 10 times. It will run for 10 times. So you can see it has printed 1 to 10, the value of x. And the fourth type of loop is do while loop. So we can use do while loop this way. Here we are using y equal to 1 and then do, let's uncomment this, while do echo the value of y and how much time the condition it should run up till less than equal to 5. So it is starting from 1 and it should run up till 5. So here is the initialization first, then increment of or decrement inside the do, or you can say the loop, and then at last we check the condition. So let's see it's printing or not. So you can see here it's printing from 1 to 5. Same way, if we change here from, it should start from 3 and run up till 5. So it will start from 3 and it is returning up to 5. But there is a small difference, friends, between while and do while loop. You need to understand this. So the difference between the while and do while loop is that while loop, as we check in the while loop, we check the condition before, after initialization, and then we do increment or decrement. So this code will only execute if this condition satisfies. Otherwise, this code will not run. But in do while loop, we do initialization first, then increment, decrement, and then at last we check the condition. So this code will also run even if this condition doesn't match. So this code will run once, only once, and then it will come out and check the condition, and if the condition doesn't meet, it will not run for next time. So do while loop even runs one time even if the condition doesn't satisfy. This is the point. The only difference is while and do while loop is that do while loop runs once even if the condition doesn't satisfy. So let's see the value let's see this. We will put the value of y as 6. Now the condition doesn't satisfy because the value of y is 6 and we want to run this loop, do while loop for y less than equal to 5 condition. So according to this condition, this should not run, but this will run one time because this line of code is written before this line. So it will execute one time, but it will not execute next time. So let's check this. So you can see, my friends, it is printing the value of while do while loop is 6. So it is executing only one time because the condition is checked later in do while loop. तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि while loop को कैसे डिक्लेयर करें. तो x इक्वल टू 1 ये डिक्लेरेशन किया हमने, इनिशियलाइजेशन किया, तब फिर while का कंडीशन हम चेक कर रहे हैं x इज लेस देन इक्वल टू 10, और फिर हम इक्वल कराएंगे x की वैल्यू को और फिर इंक्रीमेंट कर रहे हैं x की वैल्यू को, और ये प्रिंट कर रहा है हमारे स्क्रीन पे जितने बार x 10 टाइम्स है तो 10 टाइम्स ये प्रिंट करेगा, 10 टाइम्स ये लूप रन करेगा. सेम वे में अब अगर आप डू वाइल में देखें तो यहाँ पर हम y की वैल्यू 6 अलॉट कर रहे हैं, लेट्स अलॉट इट 1, और हम इसे रन करा रहे हैं लेस देन इक्वल टू 5. फर्क ये है डू वाइल और वाइल में कि वाइल में हम इनिशियलाइजेशन पहले कर रहे हैं और उसके बाद हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहे हैं.
लेकिन डू वाइल में हम पहले इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं और उसके लास्ट में कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी करता है तब भी, क्योंकि कंडीशन सबसे लास्ट में चेक होती है डू वाइल लूप में। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। बाकी दोनों ही लूप्स उतने बार चलेंगे जितना बार आपने उसमें कंडीशंस लिखा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पे लेस देन 5 है, तो ये 5 टाइम रन करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि डू वाइल लूप ये 5 टाइम प्रिंट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि 5 तक ही हमने कंडीशन दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 6 कर दूं तो इसे हालांकि रन नहीं करना चाहिए था कंडीशन के हिसाब से, पर ये एक बार रन करेगा क्योंकि ये डू वाइल लूप है, इसलिए लेट्स चेक। सो आप देख सकते हो फ्रेंड्स द वैल्यू ऑफ 5 6 एक बार रन कर जा रहा है क्योंकि ये कंडीशन बाद में चेक कर रहा है और डू का स्टेटमेंट जो भी आपका स्टेटमेंट है वो पहले लिखा हुआ है। तो ये था वाइल डू वाइल लूप का डिफरेंस। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप you all have understood different types of loops in PHP: for loop, for each loop, while loop and do while loop. And please don't forget to like, share, comment, and please subscribe to our channel for more technical and tech videos. And you can also write your queries in the comment section below. तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और साथ में आप अपनी क्वेरीज को नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स वंस अगेन।